Hello friends, I welcome you all on Unacademy. Let's crack it. Let's crack GATE and DSA with India's largest learning platform. Get Plus subscription and access unlimited live and decoded courses from India's best educators. This is the brief introduction about me. Graduated from YMC University of Science and Technology, Faridabad. Pursuing MTech from IIT Bombay. Cleared GATE with all India rank 377. Ex-faculty Devani IAS and GATE Point. More than 1 year of online teaching experience. Friends, you can download an Academy's Learning app. These are the benefits you will be getting if you download an Academy's Learning app. Like daily live classes, you will be getting live test and quizzes. Your course will be completed in a proper, organized, and structured way, and you will be having unlimited access of live and decoded courses. So these are the benefits you will be getting. And apart from that, there are different new batches that are launched on Unacademy. You can enroll in this batch. This is the batch J for civil engineering, GATE 2022. All the top educators are currently teaching here. Similarly, for all the branches like mechanical as well, there is a new batch, that is the batch J for GATE 2023, as well as there is batch J for your GATE 2022 Evolve batch. So you can enroll in these batches and you can study from the best educators of the country. And to use the RCSK code, if you will use, you will be getting maximum possible discount on your subscription. Apart from that, you will be getting my guidance also during your exam preparation. If you want to study from all the top educators, you can enroll on Unacademy Plus. Then you will be getting live classes from top educators. Apart from that, you can clear your doubts. You can ask your doubts and queries and live test and quizzes which are conducted on Unacademy app. Apart from that, your course will be completed in an organized way, in a structured way. So these are the benefits you will be getting on Unacademy Plus. Of Unacademy Iconic, like you will be getting a personal coach, questions and practice sessions you will be getting for mains. And apart from that, all the benefits you will be getting in Unacademy Iconic also. So personal coach will be guiding you throughout your exam preparation, questions and practice sessions for mains, and apart from that, study tracker and all the benefits of Plus you will be getting in Iconic also. So these are the benefits. Unacademy Plus as well as Iconic, you will be getting study from best educators, live classes, you will be getting structured course, live test and quizzes. So these are the benefits you will be getting on Unacademy Plus as well as Iconic. Regarding the fee structure, like 1 month, 3 months, 6 month, 12 month, these are the plans which are available, short term as well as long term plans which are available. This is the code that you can use while you enroll, Ashish K. Apart from that, on Unacademy Iconic, there are the two plans like 12 month and 24 months. This is the code that you can use to enroll on Iconic. If you will use this code, you will be getting my personal guidance as well as full support during your exam preparation. And on Unacademy Combat is also very frequently conducted. That is a scholarship test. In this scholarship test is going to be conducted on every week. So you can start your preparation for GATE and DSC, and you can enroll for your Unacademy Combat. Your enrollment link is given in the description box. You can appear in the live test. You will be getting the video solution just after the test, and it's your weekly practice test. It's conducted on weekly basis, and amazing scholarships are available. Apart from that, you can use this code RCSK. If you will use this code, then you will be getting maximum discount on your subscription. Apart from that, this Unacademy Combat is weekly competition test, largest weekly competition test. 60-minute test will be there. Original gate level questions. It would be your live test and all India live ranking you will be getting. So these are the benefits of Unacademy Combat, and it will be conducted on your 30th of May, next Sunday. Timing will be over 11 a.m. Registration is completely free of cost. Invite code that will be asked from you. This invite code that you can use. So these are the prices for Unacademy Combat. Like first to third rank, you will be getting free of cost Unacademy Plus subscription. 4 to 75% off on your subscription. So like amazing scholarships are available. You can participate in combat and you can win amazing scholarships. आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट योर बाउंड्री लेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं. बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. और apart from boundary layer theory, as you already know that we have completely finished your fluid mechanics. Majority of portion we have finished, like fluid statics, dynamics, statics, pressure measurement. उसके अलावा laminar flow, pipe flow, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. चलेगा. और
कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको सेम चैनल पे मिल जाएगा, चलेगा। तो आज यहाँ पे बाउंड्री लेयर का कंप्लीट यहाँ पे मैं थ्योरी आपको करवा देने वाला हूँ, दैट इज हेल्पफुल फॉर योर ऑल द एग्जाम्स लाइक PSU एग्जाम्स, ESC एग्जाम, गेट एग्जाम। इट्स हेल्पफुल फॉर योर ऑल द इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। सो देखिएगा, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन से रिलेटेड सभी आपको कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है कि इफ आई एम अज्यूमिंग अ फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, दिस इज यू आर हैविंग अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट। आपको पता है कि इफ वी आर हैविंग दिस इज द फ्लो and this is the fluid that is flowing with some velocity u infinity, and with this velocity fluid is entering over the flat plate. तो अब यहाँ पे due to the viscous action there will be the formation of boundary layer, and you know this is up to यहाँ तक आपका laminar flow होगा, उसके बाद this is your transition region, and यहाँ पे आपका turbulent flow होगा। तो ये सब जो रीजन्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चलेगा। इन दिस रीजन देयर विल बी द लैमिनार फ्लो। अब ये जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज ड्यू टू योर विस्कस एक्शन ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि आइडियल फ्लो तो होगा नहीं। विस्कोसिटी की वजह से आपको पता है कि देयर आर द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स इन द फ्लो। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट्स कैसे होंगे आप देख रहे हो, ये जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस है डेल्टा, दिस इज योर डेल्टा इज नथिंग बट योर बाउंड्री लेयर थिकनेस। अब यहाँ पे कंप्लीट सारा चीज़ें डिटेल में आपको बता देने वाला हूँ कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। जो वेलोसिटी प्रोफाइल आपको देख रहे होगा, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल, दिस इज ड्यू टू योर विस्कस एक्शन ऑफ फ्लूइड, क्योंकि एट द बॉटम जहाँ पे फ्लूइड कॉन्टैक्ट में होगा फ्लैट प्लेट के, देयर इज द केस ऑफ योर नो स्लिप कंडीशन, एंड अबव this point the velocity profile is shown by the red color, and this velocity is u infinity. But as you already know that at any height y above the flat plate, किसी height y पे देखता हूँ, so this velocity I am assuming u, this is not u infinity, this u is definitely less than u infinity। इस वर्टिकल डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो आपको वेलोसिटी प्रोफाइल नजर आ रहा है, दिस इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्लेट, राइट। तो ये x डिस्टेंस के ऊपर आपको इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल नजर आ रहा है जो हमने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन में जो भी डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पे आपको नजर आएंगी वो मैं बता देने वाला हूँ कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर योर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, और क्या क्या अजम्पशंस यहाँ पे रहने वाली हैं, चलेगा। इस तरीके से आप देखोगे कि अबाउ द बाउंड्री लेयर, देखो यहाँ पे एट दिस हाइट, इससे ऊपर यदि आप देखोगे तो जो भी वेलोसिटीज हैं द फ्लूइड इज फ्लोइंग विद फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, लेकिन इनसाइड द बाउंड्री लेयर देयर आर वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आर देयर, राइट। सो मतलब एट योर y इक्वल्स टू डेल्टा, जब आप कितना हाइट पे चले जाते हो, व्हेन योर हाइट इज इक्वल्स टू डेल्टा, एट y इक्वल्स टू डेल्टा पे आप चले जाओगे, यहाँ से यहाँ पे y पे हो, और इफ यू रीच एट दिस पॉइंट, सो दिस इज नथिंग बट योर डेल्टा हाइट बाउंड्री लेयर थिकनेस के बराबर हो जाएगा। तो एट दिस लोकेशन यू नो दैट u इज अप्रोक्सीमेटली योर 0.99 टाइम्स u इंफिनिटी। इससे ऊपर तो आप देख रहे होगे कि वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, देखो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे 0 है, नो स्लिप कंडीशन है, फिर बढ़ता जा रहा है, एंड एट y इक्वल्स टू डेल्टा एट दिस पॉइंट, इस x लोकेशन पे ऊपर, एट दिस लोकेशन x बाउंड्री लेयर थिकनेस विल बी डेल्टा, एंड द वेलोसिटी एट द बाउंड्री लेयर that will be equals to 0.99 times u infinity, चलिएगा। इसके अलावा देखिएगा, यदि आप y इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्व करोगे, एट y इक्वल्स टू 0 नो स्लिप कंडीशन है, तो नो स्लिप कंडीशन होगा तो यहाँ पे u द फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी 0। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। u 0 होने का मतलब यहाँ पे क्या है, दैट दिस इज योर नो स्लिप कंडीशन, चलिए। इसके अलावा देखिएगा, यदि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं कि y इक्वल टू 0 पे और y इक्वल टू डेल्टा पे हमने वेलोसिटीज ऑब्जर्व कर लिया है, चलेगा। इसके अलावा देखिएगा, जब y इक्वल टू डेल्टा के ऊपर आप पहुंच जाओगे तो यू नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बिकम 0, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एट बाउंड्री एट अ हाइट ऑफ डेल्टा
द वेलोसिटी 0.99 टाइम्स यू इन्फिनिटी एंड अप्रोक्सीमेटली यू इन्फिनिटी बोल सकते हो। इससे ऊपर जैसे ही आप जाओगे, इफ यू विल चेंज वाई देन वेलोसिटीज आर नॉट गोइंग टू चेंज। सो आप ये भी बोल सकते हो एट वाई इक्वल्स टू डेल्टा du अपॉन dy दिस इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज u आपका मैक्सिमम हो गया ना, उससे ज्यादा क्या ही होगा। एट y इक्वल टू डेल्टा u इज अप्रोक्सीमेटली 0.99 टाइम्स u इन्फिनिटी और u इन्फिनिटी टाइप। जब मैक्सिमम ही हो जाएगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द कंडीशन फॉर योर बाउंड्री लेयर। इसके अलावा देखिए y इक्वल टू जीरो के ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे एट y इक्वल टू जीरो, आपको ऑब्वियसली क्लियर है यहाँ पे सी एस स्ट्रेसेज आर गोइंग टू बी मैक्सिमम। और नो स्लिप कंडीशन है ना, टाउ इज गोइंग टू बी टाउ मैक्स एंड टाउ मैक्स is nothing but tau is nothing but du upon dy, tau is nothing but your du upon your dy। इस तरीके से अब मुझे बताइएगा यहाँ पे टाउ का मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालना है, तो टाउ को मैक्सिमम करने के लिए इसका स्लॉप जीरो होना पड़ेगा। इफ टाउ इज गोइंग टू बी टाउ मैक्स तो आप क्या बोलोगे, डी टाउ डिवाइड बाई डी वाई दैट इज इक्वल्स टू जीरो। और जब इसका स्लॉप जीरो, टाउ इज डी यू अपॉन डी वाई, तो यहाँ पे कर्वेचर ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो। मतलब क्या है कि एट वाई इक्वल्स टू जीरो पे यदि आप ऑब्जर्व करोगे, आपको पता है नो स्लिप कंडीशन है, यहाँ पे सी एस स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम है। अब जैसे ही आपने टाउ को देखा ये मैक्सिमम है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी योर जीरो एंड यू ऑलरेडी नो दैट टाउ इज नथिंग बट डी यू अपॉन डी वाई। दिस इज नथिंग बट योर डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर, दिस वैल्यू इज जीरो। तो ये जो सारा फंडा है यहाँ पे, मतलब चारों जो अजम्पशंस मैंने यहाँ पे बताया कंडीशंस, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे। तो दीज आर द फोर कंडीशंस जो हमने डिस्कस किया। तो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। सेकेंड, देन थर्ड कि एट y इक्वल टू डेल्टा द वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज विल बी जीरो यहाँ पे। और आप बोल सकते हो कि यदि डी यू अपॉन डी वाई जीरो होगा तो टाउ का वैल्यू भी तो जीरो हो जाएगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे टाउ इज जीरो, तो सी एस स्ट्रेस इज जीरो एट योर y इक्वल टू डेल्टा and at y equal to 0, so we are just observing only two cases, one at y equal to 0 and then y equal to delta just. So we have checked the velocities at y equal to 0 and delta, we have checked the shear stress at y equal to 0 and y equal to delta. So these are the two conditions we have discussed right now and I hope यहाँ तक बिल्कुल clear है। Now next is regarding your, देखिए जब भी हम बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली जितना मास यहाँ पे प्लेट के ऊपर एंटर कर रहा है, लेट्स अज्यूम दिस इज अ फ्लैट प्लेट एंड ड्यू टू विस्कस एक्शन दिस इज द बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। तो जितना मास यहाँ पे एंटर करेगा विद अ वेलोसिटी यू इन्फिनिटी, सेम मास यदि मैं यहाँ से चेक करूं वेदर द सेम मास इज लिविंग फ्रॉम द सेक्शन और नॉट, तो आप चेक करोगे कि द सेम मास इज नॉट लिविंग फ्रॉम द सेक्शन, देयर इज सम मास लॉस। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप चेक करोगे कि ये वाला जो कंप्लीट हाइट है, दिस लेट्स अज्यूम दिस इज डेल्टा एंड विड्थ में 1 मान लेता हूँ, तो मास जो एंटर कर रहा है, मास फ्लो रेट दैट इज एंटरिंग दैट इज रो इनटू एरिया दैट इज डेल्टा इनटू 1 इनटू यू इन्फिनिटी। मतलब दिस इज द मास दैट इज एंटरिंग इनटू द सेक्शन ए बी, ये आप सेक्शन ए बी मान सकते हो, and how much is the mass that is leaving from this section CD? Definitely the mass that is leaving from the section CD, that is definitely less than AB, that is less than your entry mass, because due to your boundary layer formation, you know, here the velocity is 0, here the velocities are less, and at this point your u at y equals to delta, your velocity u that is 0.99 times u infinity. So as you know that as velocities are less at the section CD, so definitely the same mass will not be able to cross. So definitely there is some mass loss, and that mass loss we are going to calculate, right? We will be calculating that mass loss. उस कैलकुलेशन करने के लिए कि हाउ मच इज दैट मास लॉस, तो वो सब हम कैलकुलेट करेंगे। पहले ये चेक कर लेते हैं कि CD जो रीजन है, CD जो सेक्शन है, वहां से कितना मास यहाँ पे दैट इज लिविंग फ्रॉम द सेक्शन CD। चलिए, तो मास फ्लो रेट
फ्रॉम द सेक्शन सी डी इज नथिंग बट देखो डेंसिटी इनटू, यहाँ पे आप कोई भी सेक्शन एज्यूम करोगे क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटीज आर वेरिएबल एट ईच हाइट। देखोगे कि यहाँ पे मैं y हाइट के ऊपर इस तरीके से ये dy स्ट्रिप एज्यूम करूंगा, this is your dy strip and I will check कि how much is the mass that is leaving from this strip। तो आप बोलोगे कि रो इंटू एरिया हो जाएगा आपका dy इंटू विड्थ 1, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी u एंड यू विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम जीरो टू डेल्टा, राइट। सो इस तरीके से जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज द मास दैट इज लिविंग फ्रॉम द सेक्शन सी डी, दैट इज रो इंटू यू इंटू डी वाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो टू डेल्टा। अब देखिएगा जो मास लॉस होगा दैट इज नथिंग बट हाउ मच इज द मास लॉस, दैट इज नथिंग बट मास दैट इज एंटरिंग minus mass that is leaving from the section CD. So this is the rate at which mass is lost between these two sections, क्योंकि सेक्शन ए बी से इतना एंटर हुआ है और इतना जा रहा है बाहर, दिस इज लिविंग दिस इज एंटरिंग, so difference is nothing but mass loss. Now to calculate this mass loss, one method is this कि we can calculate mass loss by this very basic condition, and next we can calculate the mass loss by using the basic fundamental properties, like we can define a new properties like displacement thickness. So by using those terms we will be calculating displacement, we will be calculating the mass loss. We are going to define a new term here क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं मास लॉस कैलकुलेट करता हूँ दिस इज अ वेरी जनरल मेथड, राइट। तो लेकिन इसका ऑल्टरनेट मेथड मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ। ऑल्टरनेट क्या है, तो इसी मास लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर कि जब भी मैं यहाँ पे बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी क्लियर है कि जो भी मास यहाँ से एंटर कर रहा है, द मास दैट इज एंटरिंग फ्रॉम द सेक्शन हियर एट u infinity, the same mass is not leaving from the section here, so definitely there is some mass loss. So how much is the mass loss? To calculate that mass loss we are defining a imaginary section, इस imaginary thickness, इसका जो नाम होगा डेल स्टार दे देते हैं, and we are assuming कि from this thickness that is displacement thickness how much is the mass that is passing through this thickness, that is nothing but your mass loss. तो यहाँ पे ये जो सेक्शन ए बी है और ये वाला जो सेक्शन सी डी है, आपको पता है कि जितना एंटर कर रहा है द सेम इज नॉट एबल टू लीव, so the difference is nothing but your mass loss. So the calculation of mass loss we are defining a new term that is displacement thickness, and this displacement thickness is defined by 1 minus u by u infinity into your dy and integrate it from 0 to delta. चलिएगा, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, मतलब हम बोलेंगे कि हाउ मच इज द मास दैट इज पासिंग थ्रू दिस थिकनेस दैट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, दैट इज नथिंग बट योर मास लॉस। तो कितना मास लॉस हुआ वो भी मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, इसका डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज नथिंग बट योर थिकनेस बाय विच द बाउंड्री लेयर शुड बी डिस्प्लेस्ड, the boundary layer should be displaced in order to compensate the mass loss, right? क्योंकि हमें हुआ क्या है कि at section AB जो ज्यादा मास एंटर कर रहा है, section CD mass is living less, तो that mass loss को compensate करने के लिए we have defined a imaginary thickness that is displacement thickness in order to compensate the mass loss, and this mass loss is due to boundary layer formation. Mass loss due to boundary layer formation. चलिएगा, इतना कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का क्लियर हो गया। नाउ हाउ मच इज द मास लॉस, तो दैट मास लॉस इज नथिंग बट, देखिएगा आप बोल सकते हो इस स्ट्रिप से from this height of delta star how much is the mass that is passing through this thickness delta star, so that is nothing but density into area is nothing but delta star into 1. I am assuming the width of this strip is 1,
the rho into a into u infinity. The fluid that is passing through this thickness is with free stream velocity because there is no boundary layer here. The fluid is this imaginary displacement thickness is above the boundary layer, so velocity is u infinity. So the mass losses can be defined as rho into delta star into u infinity. And what is the value of delta star? We can calculate delta star from here. So by this way, we can also calculate the mass loss. So this was the one method we can calculate here, we can calculate mass here, we can subtract. Second way is direct way, that is a shortcut. So just to compensate this mass loss, we have defined a imaginary term that is displacement thickness, and at this thickness, fluid is flowing with velocity u infinity. So the compensated mass loss is nothing but rho into delta star into 1 into u infinity. So I hope you got it. So everything is clear regarding it. Now the next term is regarding your momentum thickness we will be discussing. So now as you are already aware, if there is some mass loss between these two sections, so definitely there is some momentum loss also. As you already aware, this is the section AB, there is some mass loss at this section. There is some mass loss from AB and CD. Higher mass is entering here, lower mass is leaving here. Similarly, the high momentum is entering here, the large momentum is entering here, and the small value of momentum is leaving from the section CD. So there is some momentum loss. How we are going to calculate that momentum loss? That I'm going to discuss, right? So next is regarding your momentum thickness. Concept is exactly similar. Next is regarding your momentum thickness. We will be discussing this also. So this is, we are having a flat plate, and like this there is a boundary layer formation. As you already aware, this is the due to the velocity of due to the boundary layer formation, there is some momentum loss because here the fluid is entering with u infinity. So to calculate the momentum thickness, we are going to define a new term, that is your momentum thickness. So we are going to define that term with theta, and at this thickness, in the thickness of your theta, the fluid is flowing with velocity u infinity. This is nothing but your momentum loss. How much is the momentum loss? That we can calculate by finding the momentum of the fluid passing through this section, red colored section, momentum loss. So how much is this momentum loss? That is nothing but your density into area. I can calculate by momentum thickness. This is delta into 1, that is width. So rho into A into u infinity, that is the mass flow rate. Mass flow rate multiplied by the velocity, that is rate of change of momentum. So at this rate, there is the momentum loss, rho into theta into u infinity square. So this is your momentum loss. This can be asked in your exam. This can be the objective question. Apart from that, there is one more, like, now you can ask what is this momentum thickness, theta. This momentum thickness is defined by integral of u by u infinity into 1 minus u by u infinity into dy. Right? You can integrate it y from 0 to delta. We will be solving a question also. In that question, that will be absolutely clear. And the concept is, I hope, absolutely clear. The thickness by which your boundary layer should be displaced, by how much height the boundary layer should be displaced in order to compensate the momentum loss, right? So the momentum thickness is nothing but the thickness by which the thickness by which the boundary layer should be displaced in order to compensate momentum loss. I hope it is absolutely clear to you. So ये जो important points हमने जो discussion किया है, that is very helpful for your calculation. मतलब momentum thickness का लगभग concept आपको clear हो गया है. और कैसे इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे, we will be discussing a numerical also. I hope it is absolutely clear to you that at this section AB there is some momentum is entering at the section, and the section CD the momentum is leaving.
but there is some loss. So that loss we are compensating by calculating a momentum thickness, and the formula of momentum thickness theta is this. And how much is that loss that we have calculated? The similar way, we can calculate a new term, that is energy thickness. That is also very important. So next is regarding your energy thickness that I will be telling you. So this term is defined by your delta star energy thickness, and this is the same concept as we have earlier discussed. Due to boundary layer formation, there is some loss of energy between two sections, and that loss of energy is compensated by defining a new term. So how much is that energy loss? That is nothing but half mv square. So half mass is nothing but rho into area is del star into 1 into u infinity. This is half, this is mass flow rate into u infinity square. So the energy loss between these two sections, AB and CD, that we have defined, that is your by this formula, half mv square. So if you will solve it, you will be getting half rho into delta star into u infinity cube. So this is your energy thickness we have calculated. Delta star is your energy thickness. I will be telling you what is the formula of energy thickness also. And this energy thickness delta star, this we are going to define as u by u infinity into 1 minus u by u infinity square into dy, and you can integrate it from 0 to delta, right? You will be getting your energy thickness. Delta is your boundary layer thickness. So we will solve a numerical, and that will help you to find out that will help you to understand these terms as well. And again the same terms, the same definition, that the thickness by which boundary layers should be displaced in order to compensate the loss of kinetic energy. So that is the thickness by which your boundary layers should be displaced in order to compensate thickness by which your boundary layers should be displaced in order to compensate kinetic energy loss. And this is happening at this section. We are going to define a thickness delta E star, that is your energy thickness, and how much is the energy that is crossing through this thickness, that will be nothing but your kinetic energy loss, right? So that we have already calculated like this. We can define a strip of thickness like delta E, and how much is the energy that is crossing through this thickness delta E, that is nothing but your kinetic energy loss, as we have discussed in your earlier cases regarding momentum loss, regarding uh, mass loss. So there is the same thing. If there is some mass loss, so definitely there is some loss in kinetic energy, there is some loss in momentum. So these points we have discussed, right? So I hope it is absolutely clear to you. Now there is very important points. We will be calculating the values of these thickness by assuming a numerical, and that would be very helpful for you. So we will be assume a very simple case in which there will be a linear velocity profile, and in that linear velocity profile we will be calculating all this thickness. So let's assume there is the flow, and in this flow the profile is like this: u by u infinity is y upon delta. Velocity profile is linear, right? So if I am taking the linear velocity profile, and in this case you have to find out your all the thickness, like displacement thickness, momentum thickness, and energy thickness. So all these three formulas you have to calculate in the terms of what? By using the basic standard formulas you have to calculate your delta star, that is displacement thickness, theta is nothing but momentum thickness, delta E is nothing but energy thickness, right? So we will be calculating all these values, and let's check what are the values coming here. So we already know that
what is the value of, what is the formula for displacement thickness? That is 1 minus u by u infinity into delta, 1 minus u by u infinity into dy, इंटीग्रेट इट फ्रॉम जीरो टू डेल्टा. सो जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला आ जाएगा. एंड दिस डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग वेरी बेसिक फॉर्मूला दिस. सो यहाँ पे मैं u by u infinity का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ. लेट मी सब्सटीट्यूट द वैल्यू of u by u infinity. So 1 minus y by delta integrated and from integrate to 0 to delta, right? So this I will be getting what? Y minus y square divided by 2 delta integrated from 0 to delta. So that will be delta minus delta by 2. That will be over delta divided by 2. So it means the value of displacement thickness, that is nothing but your delta by 2. So now this is a very standard question that is asked in very exams, ESC, PSU, and all the exams. It's very frequent question. Next is assuming the linear velocity profile, what is the value of momentum thickness? So let's calculate the value of theta. So the formula of theta is nothing but u by u infinity into 1 minus u by u infinity into dy, integrate it from 0 to delta. So you already know that u by u infinity is nothing but we are assuming a linear velocity profile. So y by delta into 1 minus y by delta into dy, integrate it from 0 to delta, right? So once you will integrate it, you will be getting y by delta minus y square upon delta square, and you have to integrate it from 0 to delta. So once you will integrate it, you will be getting y square divided by delta minus y cube divided by 2 आएगा, y cube divided by 3 delta square, and if you substitute the limits from 0 to delta, you will be getting delta by 2 minus delta by 3. So this term is nothing but your delta upon 6. So the value of theta, that is equals to delta upon 6. This is also very frequent question that is asked in many exams. Like it's also very good question that is asked in multiple exams. I hope you are aware of it. So we have discussed many cases regarding your energy thickness, displacement thickness, conditions of boundary layer, assumptions we have discussed. So all these points are very important. अगला जो हमारा आता है ना, दैट इज रिगार्डिंग योर एनर्जी थिकनेस. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया. अब अगला है हमारा रिगार्डिंग एनर्जी थिकनेस, दैट इज रिगार्डिंग डेल्टा ई. सो एनर्जी थिकनेस का फॉर्मूला सभी को पता है, u by u infinity इंटू 1 माइनस u by u infinity स्क्वायर इंटू dy. इंटीग्रेट कर दीजिएगा फ्रॉम 0 टू डेल्टा. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, u by u infinity is nothing but y by delta, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं ना, वी आर अज्यूमिंग द लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल. द क्वेश्चन इज मेंशन्ड हियर that we are assuming linear velocity profile. So 1 minus y by delta whole square into dy, you can integrate it from 0 to delta, right? So once you will integrate it, y by delta minus y cube by delta square, and once you will integrate this equation from 0 to delta, what you are getting here, you are getting here y square divided by 2 delta minus y power 4 divided by 4, ये डेल्टा क्यूब आएगा यहाँ पे. चलिए y पावर 4 डिवाइड बाई डेल्टा क्यूब. तो लिमिट्स आप डाल देंगे यहाँ पे 0 से डेल्टा. So you will be getting what? Delta by 2 minus delta by 4. तो you are getting delta upon 4. So मतलब क्या है कि जो हमारे पास एनर्जी थिकनेस का वैल्यू आया है, that is coming out to be delta upon 4. That is also very standard question. मतलब that is also very frequently asked. I hope you got all these points regarding your thickness, that how to calculate your momentum thickness, how to calculate your energy thickness, everything we have discussed regarding it. So we have quickly revised your conditions of boundary layer. Boundary layer theory we have discussed. So there are many conditions here. So all the conditions we have discussed. And apart from that, apart from these conditions, we have discussed the significance of your mass loss, significance of displacement thickness, their definition,
momentum thickness, their definition, energy thickness, and by assuming a linear velocity profile, what are the values you are going to calculate for momentum, for displacement thickness, for momentum thickness, for energy thickness, like this. So we have calculated like this. Now, there is a very standard equation that is known as your Blasius equation, वो हम डिस्कस करेंगे. तो देखिएगा जब भी यहाँ पे हम बाउंड्री लेयर थ्योरी डिस्कस करेंगे, तो बाउंड्री लेयर थ्योरी में जो आपका जो क्वेश्चन जनरली आपको मिलने वाले हैं, दे आर फ्रॉम लाइक you can categorize your questions कि most of the questions you will be getting regarding your flat plate, and flat plate में भी आपका laminar flow का questions मिलेगा. बाउंड्री लेयर्स में जो भी जनरली हम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, that you will be getting for laminar flow over flat plate, and for that laminar flow over flat plate you can apply a equation that is known as your Blasius result. Blasius result क्या कहता है कि your boundary layer thickness is nothing but your 5x upon root of Rex. You know that at any distance x from the front edge of the flat plate, यहाँ से यदि मैं x distance दूर चला जाऊँ, यहाँ पे जो हमारा ये boundary layer का thickness है delta, this is defined as your 5x upon root x. X is your distance from the front edge. So if you will calculate it, then you will check it कि delta is proportional to root of x, because R Reynolds number is nothing but your rho into u into x divided by mu, divided by your mu. चलेगा. तो इस तरीके से कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो आइए अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे ऊपर x है, डिनोमिनेटर में रूट x है, तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू रूट x. तो आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे कि डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2, मतलब एट एनी टू लोकेशन यदि आप चेक करना चाह रहे हो तो आपका जो रिलेशन आएगा दैट विल बी रूट ऑफ x1 अपॉन x2. देयर आर मेनी न्यूमेरिकल्स दैट विल बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस रिजल्ट, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. It means if you remember it, so but just you have to check whether the flow is laminar or not over a flat plate, right? And there is one more equation that is known as your momentum von Karman equation, momentum integral equation, momentum integral equation, that is also known as your von Karman equation. तो यहाँ पे देखिएगा उनका रिजल्ट क्या है, उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे इस तरीके से वी आर हैविंग अ फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, तो डेफिनेटली यहाँ पे इफ यू टेक एनी टू सेक्शंस, तो यहाँ पे देखोगे कि कुछ मोमेंटम एंटर हो रहा है, देयर इज सम मोमेंटम दैट इज लिविंग. सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज नथिंग बट योर फोर्स. तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन. इसका जो बेसिक आपका फाइनल इक्वेशन है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज डी थीटा अपॉन योर डी एक्स. मतलब एक्स डिस्टेंस के ऊपर मैंने क्या लिया है, आई हैव टेकन अ स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डी एक्स. So the d theta upon dx, मतलब the rate of change of momentum thickness. Theta is nothing but your momentum thickness here, जो हम already discuss कर चुके हैं अभी. So this is very important result. So this d theta upon dx, this is nothing but tau w, that is wall shear stress divided by rho into u infinity square. Complete concept clear है. Tau w is your wall shear stress. चलिए. So this is going to be very helpful equation that I'm going to apply this equation in like one question also, and you will be getting, and you will get the point also कि what is the basic funda behind it. चलेगा. We can discuss one question regarding it कि regarding your momentum integral equation d theta upon dx. If you will, once you will apply it, you will be getting your all the concept crystal clear, right? So next we can discuss a very basic case, that let's assume your velocity profile is your linear y upon delta, and in this case you have to tell me find the value of boundary layer thickness, find delta in terms of Reynolds number. So if you want to calculate your boundary layer thickness delta in terms of Reynolds number, only you are given the velocity profile that is your linear. So once you apply this result, you will be getting all the concept crystal clear. कैसे
कि देखिएगा यहाँ से सबसे पहले आप थीटा निकालेंगे. थीटा दैट इज मोमेंटम थिकनेस, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज डेल्टा अपॉन 6. इन केस ऑफ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल अर्लियर वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ इफ यू अप्लाई d theta upon dx, that is nothing but your tau w upon your rho into u infinity square, and tau w is nothing but your mu into du upon dy, wall shear stress. This d theta is nothing but your tau w into your dx divided by rho into u infinity square. This wall shear stress is nothing but we have already discussed that this I can define as mu into, from here, mu into du upon dy, na? Mu into u infinity divided by delta. This is nothing but your wall shear stress. Mu into v divided by h, इस तरीके से, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है. तो लेट मी सब्सटीट्यूट हियर म्यू इंटू यू इन्फिनिटी डिवाइड बाई डेल्टा और dx, और डिनोमिनेटर में है रो इंटू यू इन्फिनिटी स्क्वायर. So this is the value of your d theta that you are getting here. Now, as you already know that we have already calculated this d theta by dx, this d theta upon dx, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि that is nothing but d delta upon your 6 d delta upon dx. So d theta को I can replace by d delta here, और वहां से complete आपको solution मिल जाएगा. d theta will be nothing but your d delta divided by 6. तो इसको मैं replace कर दे रहा हूँ. That is your d of delta divided by 6, and that will be equals to this term. जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, बाउंड्री लेयर थिकनेस का फॉर्मूला आ जाएगा. I will be calculating the value of d delta. I will be calculating the value of delta in terms of your Reynolds number. कैसे? ये रो इंटू यू इन्फिनिटी डिवाइड बाई यू म्यू, ये टर्म आपका रेनॉल्ड्स नंबर बन जाएगा, राइट? So at any location x, I will be calculating the value of Reynolds number from here. चलेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको. जैसे इसको जब जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे, once you will integrate it, चलेगा. So this you will be getting that delta, this is equals to 6 times, ये देखो, mu into u infinity, mu into ये dx इंटीग्रेट होके x बन जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बनेगा देखो, ये वाला रो इंटू यू इन्फिनिटी, 1 u infinity will be cancel out, denominator will be rho into u infinity divided by this term is your delta. तो ये जो डेल्टा है इधर, अच्छा ये इधर डेल्टा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो डेल्टा इंटू डी डेल्टा आपको इंटीग्रेट करना होगा इसको, एंड ये dx इंटीग्रेट होके आपका क्या बन जाएगा, x बन जाएगा. सो दिस टर्म यू आर गेटिंग, राइट? तो यहाँ पे आपका डेल्टा स्क्वायर बाई 2 होगा. दिस टर्म इज डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाई 2. दिस इज इक्वल टू 6 इंटू, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो टर्म आएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर ये 6 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी देयर, राइट? ये वाला जो टर्म है दैट विल बी ओवर एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाय योर रेनॉल्ड्स नंबर. तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा का जो वैल्यू है यू विल बी गेटिंग 12 रूट ऑफ 12 इंटू एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. So delta you will be getting, that is root of 12 into x divided by root of Reynolds number. तो मतलब क्या है, you are getting 3.46 into x divided by root of Reynolds number. तो यहां से भी आपको पता चल रहा है कि delta is proportional to root of x. That we already discussed in Blase's result. तो जब भी देखिए बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन, मतलब how the boundary layer thickness will vary with respect to x, so that we have discussed in this case. So that is your very basic standard result जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है. ये मैंने एक्स स्क्वायर क्यों किया है वो आपको क्लियर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये रेनॉल्ड्स नंबर को बनाना है ना, तो रेनॉल्ड्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए एक ऊपर एक्स और एक डिनोमिनेटर में एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा. सो बिकॉज रो वी इंटू एक्स इज योर रेनॉल्ड्स नंबर, सो आई हैव मल्टीप्लाइड एक्स इन डिनोमिनेटर, एक्स इन न्यूमरेटर, just to make this term as a Reynolds number. So
REX, right? This is REX. So that is REX we have discussed. So delta at any location, delta x is nothing but 3.46 into x divided by root of REX. So at a distance x from the leading edge, we have calculated the thickness, we have calculated the height of boundary layer. So वो हमने डिस्कशन कर लिया है. तो कंप्लीट यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि आपको बेसिक कोई भी न्यूमेरिकल पूछा है जिसमें किन्हीं भी दो लोकेशंस के ऊपर x1 एंड x2 के ऊपर आपको यहाँ पे बाउंड्री लेयर थिकनेस का कंपैरिजन करा रहा है डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 पे, तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 इज नथिंग बट रूट ऑफ x1 अपॉन x2. सो लाइक दिस. So this is very important result. So as we have discussed, there are very important points we have discussed in this today's session. Next, we will be discussing regarding turbulent flow and dimensional analysis in our next session. I hope you got all the points. We have discussed regarding your momentum thickness, energy thickness, boundary layer formation, and we have discussed regarding your Blasius result. That is also very important. And regarding your von Karman integral equation, that is we have applied the equation in your this very basic case, and we have calculated the boundary layer thickness formula, and that is also very important. So now we will be discussing in our next session regarding your all the points in your turbulent flow and regarding dimensional analysis in the next session. Remaining we will be discussing in the next session. You can register on Unacademy by using the code ASHISK. You can join the Telegram group, that is LeadGate Telegram group, and once you will join, you will be getting all the updates regarding our upcoming videos. Apart from that, you can join the Telegram group ASHISK Kosik Unacademy for the test PDF. You can subscribe our YouTube channel for all the updates. Thank you so much for watching this video, and please share among all your friends. Thank you.